मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये, राइट। Okay, quadrant 1, 2, 3, 4. So now let's start with the beginning. Ki step 1 ki we must have a understanding of content licensing structure, and that we can understand with the help of open educational resources. So OER पे बात करते हैं, then step by step सारे stages को एक एक करके clear करेंगे. Okay. So OER, first step, what is the OER? Right? And what are their further licensing type, Creative Commons, so many things we have. Open educational resources. Okay. Okay. So OER means the things are available openly, open access, open content, open courseware, open source software, open education, means available openly without any problem, without any issue, right? The term was first used in 2002 in a UNESCO conference, OER, Open Educational Resources. So अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो हमें इसकी OER की जरूरत ही क्यों पड़ी, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज की? जी, हम जितना भी कंटेंट डेवलप करते हैं, मेजोरिटी ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, वी गिव एज ए कॉपीराइट हम उसको हम टैग कर देते हैं, right? And as per the Copyright Act, we are not allowed to use any content without the permission of the author, if the content is copyright. So sometime चलो हमें परमिशन मिल भी जाती है कंटेंट को यूज करने के, बट वी आर नॉट इन अ स्टेज कि हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें, कुछ अपडेट कर सकें कंटेंट, कॉपीराइट कंटेंट मींस कंटेंट तो बहुत सारा है, बट वो एक रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट है जिसमें मैं किसी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, राइट? जैसे किसी एक पर्सन ने कोई रिसर्च किया एंड फर्दर मैं उसी एरिया में कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहता हूँ, बट वो कंटेंट ऑलरेडी कॉपीराइट है, अब मैं उस पर कैसे आगे फर्दर इंप्रूवमेंट डालूं? तो बहुत सारी हर्डल्स जनरेट होती हैं जब हम कॉपीराइट्स की तरफ मूव होते हैं मैक्सिमम टाइम. सो दैट्स एक रिक्वायरमेंट रेंज हुई कि लेट्स इंट्रोड्यूस ए न्यू थिंग, OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, न्यू टाइप ऑफ लाइसेंस. सो व्हाटएवर कंटेंट available under OER, anyone can use that content without any permission. So it means अगर content OER category में आता है, we can use that content without taking any permission of the author, and I can do the modifications as well. किसी भी तरह की modifications कर सकता हूँ. Even OER content तो ये तक कहता है कि अगर आप content consume कर रहे हैं and even you are not mentioning the references, आपने author को credit भी नहीं दिया, reference नहीं दिया, citations नहीं दिया, then it's also fine. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इवन यू हैव नॉट गिवन एनी रेफरेंस और साइटेशन और आप कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, लीगली इट्स वैलिड, यू कैन डू इट. फिर से ओपन कंटेंट, एनीवन कैन यूज इट विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द ऑथर. So if any content available under OER means we can use it without any issue, without any problem. See, OER are material offered freely and openly to use and adopt the teaching, learning, development, and research. Right? So OER, further we have 5R framework. So if the content available under OER, then we can apply this 5R framework. 5R framework says reuse, revise, remix, redistribute, and retain. I can do these 5R with the OER content without taking permission from the author. Right? That is the 5R framework we have in the OER. Retain means make an own copy. Reuse means make a wide range of way. Revise means adopt, modify, and improve. Remix means combine two or more. Distribute means share with others. Sorry, थोड़ा bad throat की वजह से. So it's about open license used to share educational material, no permission required as long as the open license is respected. Correct. Okay.
Then we have further Creative Commons licensing structure in the OER. In the OER, further we have Creative Commons licensing structure. So now अब Creative Commons licensing structure की जरूरत ही क्यों पड़ी? What happened कि अगर मैंने सारा ही कंटेंट ओपन मोड में अवेलेबल कर दिया, ओपन एक्सेस, सो नाउ व्हाट एनीवन कैन डू, कोई भी ओपन कंटेंट को मॉडिफिकेशंस करने के बाद दे कैन से कि नाउ इट्स माय कॉपीराइट, व्हाटएवर ओपन कंटेंट वी हैव, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, अपडेट करेंगे, एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन एनीवन कैन से कि नाउ इट्स माय कॉपीराइट, दे कैन से लाइक दिस. सो इट मींस मेरा जो मोटिव था कि एजुकेशनल कम्युनिटी को मेरा कंटेंट ओपनली अवेलेबल होता रहे और उसमें कोई भी अपना कंट्रीब्यूशन ऐड करके अगेन उसको ओपन कम्युनिटी को दे, तो उसमें एक बैरियर आ गया कि अब ऐसा नहीं है. फर्दर मॉडिफिकेशन के बाद एनीवन कैन stop further sharing under the copyright licensing. Right? So to avoid this thing, then Creative Commons licensing structure were introduced. So here in this Creative Commons licensing structure, the level of sharing were defined. कि आप मेरा कंटेंट फ्रीली यूज तो कर सकते हैं, बट देर आर सम level of sharing, some restrictions. Let's say you can use my content without my permission, but you are not supposed to do any modification. Use कीजिए without my permission, but not supposed to do any modification. Another way, like I can say, you can use my content without my permission, but you are not supposed to use this material in commercial way. Another level means you can use my content without my permission, and if you are doing some modification in my content, then you have to share it again under OER only. You cannot convert into the copyright. तो इस तरह से लेवल्स ऑफ शेयरिंग इंसर्ट कर दिए गए, जिसे हम क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर कहते हैं इन दी OER. सो इट मींस अगर अब इसमें लेवल ऑफ शेयरिंग्स आ गए, अब ना तो ये कॉपी राइट रहा और ना ही अब ये ओपन सोर्स रहा, ओपन कंटेंट रहा, कुछ लेवल ऑफ शेयरिंग्स आ गए इन बिटवीन. इट मींस अब ये क्रिएटिव कॉमन इट्स इन बिटवीन टू द कॉपीराइट एंड द कॉपी लेफ्ट, दोनों के बीच में कहीं क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, वेयर वी हैव सम लेवल ऑफ शेयरिंग. अब वो लेवल ऑफ शेयरिंग है क्या? You can see Creative Commons is a non-profit organization that enables sharing and use of creativity knowledge through free legal tool. Creative Commons license allow content creator to openly declare the level of sharing that allowed with their works. Level of sharing. Okay, so आपने ये symbol देखा ही होगा. Majority of time you can see with this round circle that we call as a copyright or right result. On the other hand, we have this Creative Commons symbol. Creative Commons का symbol we have double C with this round circle, right? So now we have two type of licensing structure. You can see एक तो है copyright, another we have a Creative Commons. जो भी कंटेंट अब हम कंज्यूम करेंगे, आपने नोटिस किया होगा कि उस कंटेंट पर या तो लिखा होगा ऑल राइट रिजर्व्स कॉपीराइट, या लिखा होगा क्रिएटिव कॉमन, राइट? और कुछ ऐसा कंटेंट भी आपको मिलेगा मैनी टाइम्स वेयर यू फाइंड नथिंग इज मेंशन, कुछ भी नहीं लिखा होगा, ना ही कॉपीराइट लिखा होगा और ना ही क्रिएटिव कॉमन OER, कुछ भी नहीं लिखा होगा. देन व्हाट वी सपोज टू डू? अब वो कंटेंट कौन सी कैटेगरी में आएगा? इफ नथिंग इज मेंशन विद द कंटेंट, राइट? So where nothing is mentioned with the content, no licensing type is mentioned in the content, that content assumed to be a copyright content. That content assumed to be a copyright content if nothing is mentioned with any content.
दैट मीन्स अगर वो क्रिएटिव कॉमन कंटेंट है देन डेफिनेटली वहां पर क्रिएटिव कॉमन मेंशन होगा। आगे बढ़ते हैं। So creative common licensing structure, we have a 6 type of licensing structure creative common. You can see on the screen 6 type है हमारे licensing structure के। Top one is public domain, right? And public domain के बाद public domain you can say copy left freely available. Public domain के बाद the licensing structure first is start with CC by CC by that is equal to public domain। बस यहाँ पर हम अपना एक लाइसेंसिंग टैग दे देते हैं कि देखिए ये एक क्रिएटिव कॉमन। These are the attribution, ये जो आप सिंबल्स देख रहे हैं man with the symbol man, CC by you can see these are the symbols to represent the licenses, right? जैसे कि कॉपीराइट का एक सिंबल है, क्रिएटिव कॉमन का सिंबल है, देन फर्दर देयर लाइसेंसिंग जो एट्रीब्यूशंस है 6 टाइप्स है उनको डिफाइन करने के सिंबल्स है। So first we have a CC by which is free, right? Then second we have a CC by SA means shared alike. SA means shared alike. Okay, shared alike means to say कि मैंने कोई कंटेंट अगर कहा कि that content is come under the CC by SA, then what does mean कि मेरा कंटेंट कोई भी यूज कर सकता है विदाउट माय परमिशन and they can do the modifications as well, but after the modification they are not supposed to change the license type. They have to share further again with the CC by SA only. So it's restricting कि आप लाइसेंसिंग का टाइप चेंज नहीं कर सकते। So maximum majority of academicians using the CC by SA. मोस्ट फेवरेबल जो एक लाइसेंसिंग टाइप है जो मैक्सिमम प्लेस आपको मिलता है दैट इज सीसी बाय सॉरी एस ए शेयर अलाइक। ओके, देन थर्ड वी हैव ए सीसी बाय एनसी नॉन कमर्शियल। नाम से ही जाहिर है कमर्शियल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। You can use it without my permission, but you are not supposed to use it under the commercial activity. Then fourth one is CC by ND, no derivatives, means modifications are not allowed. Rest you can do it. Modifications are not allowed. Then we have CC by NCSA, combination of about two, non-commercial, share alike. It's more restricted. Then CC by NC and D, non-commercial, no directives, more restrictive. You can see जैसे ही मैं डाउनवर्ड्स आता जा रहा हूँ रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ती जा रही है, और जैसे ही अपवर्ड के लाइसेंस है लेस रिस्ट्रिक्शंस है, right? So then you can see these are the licensing type mostly versatile and openness. So that's why I said कि CC by SA सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला लाइसेंसिंग टाइप शेयर अलाइक। From this picture you will be more clear कि ये लाइसेंसिंग टाइप है क्या, right? Mute yourself, मैं कर देता हूँ तो। Okay, so from this slide you will be more clear. You can see right hand side we have a public domain, no right reserved, and opposite left hand side you can see all right reserved, copyright. Here is the public domain where we call as a no right reserved, and copyright all right reserved, right? So you can see in between both of them we have the creative common, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं है। So ना तो ये copyright है ना ही ये public domain में है, तो दोनों के बीच में we have the creative common license, and you can see CC by and CC by SA, it's near to no right reserved, so it means it's most free. और जैसे जैसे I am moving towards the all right reserved and going to more restrictive,
डायरेक्शन से क्लियर है. सो इफ आई मूविंग टुवर्ड्स द नो राइट रिजर्व्ड, सो ये मोस्ट अकोमोडेटिंग होता जा रहा है. बट इफ आई मूविंग टुवर्ड्स द ऑल राइट रिजर्व्ड, ये मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव होता जा रहा है. तो CC by SA, these are the mostly used licensing type, or CC by ND as well. But this last three, these are more restrictive, right? From this slide you will be clear कि ये कहाँ पर lie करते हैं. This one. Okay, then this slide will give you more clarity. Here, CC by public domain, where no attribution is required, simply public domain. So it's not a licensing type of OER. Just to show you comparison, क्रिएटिव कॉमन के इक्वल हमारा होता है CC बाय, बट डिफरेंस इज कि हम उसमें एट्रीब्यूशन देते हैं. पब्लिक डोमेन में नो एट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड. देन CC बाय SA, we can see change license is not permitted, rest is okay. CC by ND, you can see here modifications and adopts are not permitted. CC by NC, non-commercial, commercial activity is not allowed. You can CC by NCSA, combination of above two, commercial activity and change license not allowed. And then CC by NCND, commercial use and modifications are not allowed. Right, from this slide, last two slides give you the more clear picture कि ये restrictions क्या है, level of sharing क्या है. Right, these are the 6 licensing type we have. So जब ये Creative Commons 2002 में बनाया गया था, right, and you know technology as I said changing very fastly, time to time चीजें बदलती रहती हैं. 2002 में इंटरनेशनल ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली इतना नहीं था जितना आज की डेट में, ई कॉमर्स जितना आज की डेट में. सो उस तरह से लाइसेंसिंग की चेंज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती रहती है. जस्ट लाइक आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. सिमिलरली क्रिएटिव कॉमन के भी लाइसेंसिंग के वर्जन्स हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं. So initially, Creative Commons launched in 2002 with a version 1.0, and time to time उसमें modifications आती रही as per the technology moving further. जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई टेक्नोलॉजी के साथ साथ नए वर्जन्स भी आते चले गए. So now latest version of Creative Commons we have CC 4.0. So many places आपने नोटिस किया होगा लाइसेंस पे मेंशन होता है Creative Commons 4.0. That means it's a version of the Creative Commons. So latest version we have a Creative Commons 4.0, and these are the changes जो time to time होते रहते हैं. Just like in 4.0 में इंटरनेशनल लाइसेंसेस को लेकर चेंजेस हुए. राइट, जब बाउंड्री लेस ट्रांजैक्शंस होने लगी, कंटेंट शेयरिंग होने लगी, तो अकॉर्डिंगली चेंजेस आते चले गए. सो 4.0 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द क्रिएटिव कॉमन्स. ओके, सो ये तो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, एक थ्योरी थी कि हमारा OER क्या है. राइट, OER के लाइसेंसिंग टाइप्स क्या है, दैट वी हैव सीन. ओके, अब कुछ प्रैक्टिकल अगर हम बात करें, हम कॉपीराइट कंटेंट यूज करते हैं. ऑफ कोर्स वी ऑल आर यूजिंग कॉपीराइट कंटेंट, राइट. Okay, so let me know a simple question after reading this all the theory. एक simple सा question आपसे जानना चाहूँगा. Suppose I have a content which is very much related to my online course, या जो भी डिसिप्लिन में पढ़ाता हूँ, जो कोर्स में लाइव करना चाहता हूँ, उससे बहुत ज्यादा रिलेवेंट एक कंटेंट है. वो PPT, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो सकता है. Very much relevant, and I wish to use this content in my online course, but I know कि ये content copyright content है, right? वो एक copyright content है, that I know. So now you let me know what is your opinion after reading this much. क्या उस copyright content को
मैं अपने ऑनलाइन कोर्स में यूज कर सकता हूँ? Yes, sir, we can use it, but we need permission. परमिशन। ओके, चलो परमिशन से एक चीज, एक नया क्वेश्चन सामने आया मेरे माइंड में। आप सब बताइएगा मुझे, आई थिंक ना बताने की जरूरत नहीं है। जस्ट आस्क ऑनेस्टली योरसेल्फ, आपने अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में कितनी बार ऑथर से परमिशन ली है बिफोर यूजिंग ए कॉपीराइट कंटेंट? कोई ट्रूली नहीं आई लेता डोंट सर, वांट आंसर, मुझे आंसर नहीं चाहिए। कोई नहीं आप लेता सर। ऑनेस्टली योरसेल्फ अपने आप से पूछिए, मुझे आंसर नहीं चाहिए, एंड वी नो द आंसर। How many times we are taking the permission before using any copyright content? Okay, now come back to the previous question कि क्या मैं उस copyright content को use कर सकता हूँ? The answer one कि after taking the permission, okay, agree, चलिए मैं permission के बाद मान लिया आपको use कर सकता हूँ। So permission लेके use कर लिया, references भी दे दी, citations भी दे दिया, it's okay. Then OER का क्या मतलब रहा फिर? तो मैं कोई भी कंटेंट यूज कर सकता हूं। और एक्ट क्या कहता है कि इफ यू आर यूजिंग एनी कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑथर, दैट इज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट। सर उसमें एक बात एक हो सकता है सर, उसमें कि यूज कर सकते हैं, मिसयूज नहीं कर सकते। वो दूसरे को हम ये नहीं कर सकते ये मेरा है। ओके, वो तो हम साइटेशन रेफरेंसेस दे ही रहे हैं, जी राइट, मींस बता ही रहे हैं कि दैट कंटेंट इज बिलोंग टू दिस ऑथर, सर। राइट। साइटेशंस इसीलिए तो दिया जाता है कि वी आर गिविंग द क्रेडिट टू द ऑथर कि ये कंटेंट मेरा नहीं है, ये इनका है, ठीक है। जी सर। ओके, सो रेफरेंस सेंसिंग साइटेशन देना, क्या ये सफिशिएंट है कॉपीराइट कंटेंट को लेकर? अगर है तो फिर ओईआर की जरूरत क्यों है? हम कुछ भी यूज करें, ना परमिशन लेनी है, रेफरेंस दो, साइटेशन दो, कुछ भी यूज करो, फिर ओईआर की रिक्वायरमेंट क्या है? फिर इतनी बड़ी कहानी हमने सुनी ओईआर को लेकर, इतना कुछ है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? Right? अगर इतना ही इजी है कॉपीराइट कंटेंट को यूज करना। ओके, सो और एज आई सेड कि कॉपीराइट एक्ट कहता है कि वी आर नॉट सपोज टू, या डॉक्टर मिताली वोरा, मिताल वोरा। Maybe that's because one can contribute in the existing content. ओके, गुड वन, वेरी नियर टू द आंसर। Okay, thank you. ओके, सो सी कॉपीराइट कंटेंट को एक्ट कहता है कि यू आर नॉट सपोज टू यूज विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑथर। इन केस ऑथर गिव अस ए परमिशन, वी हैव टू यूज एज इट इज, नो चेंजेस अलाउड, दैट्स ओके। बट आज तक हमने कोई परमिशंस भी नहीं ली, करेक्ट, विदाउट परमिशन, इज ए ट्रू, राइट, हमें एक्सेप्ट करना होगा, इज ए ट्रू, हम परमिशन भी नहीं ले रहे हैं और कॉपीराइट कंटेंट को रेफरेंस साइटेशन देते हैं, यूज भी कर रहे हैं। सो इट मींस अभी तक तो हम सबको पनिशमेंट हो जानी चाहिए थी, राइट। इफ एक्ट से लाइक दिस की कॉपीराइट कंटेंट हम यूज नहीं कर सकते और हम तो बहुत कुछ करते आ रहे हैं, तो इट मींस हमें अब तक तो पनिशमेंट हो जानी चाहिए थी कोई ना कोई एक्ट लागू करके, करेक्ट। बट अभी तक हम सेफ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देयर इज रीजन बिहाइंड दैट कि कॉपीराइट कंटेंट वी कैन यूज वी कैन यूज इन द कॉपीराइट एक्ट। Copyright Act Article 52B says if you are using a copyrighted material under fair use, then it's not a infringement of the Copyright Act. It means we have a assumption in the act कि अगर मैं उस कंटेंट को फेयर यूज में कर रहा हूं। अब फेयर यूज का मतलब क्या है? फेयर यूज मीन्स इफ आई एम यूजिंग द कंटेंट फॉर एकेडमिक एक्टिविटी, और हम क्या कर रहे हैं? एकेडमिक एक्टिविटी। कोचिंग सेंटर इज नॉट ए एकेडमिक एक्टिविटी, दैट इज ए प्योर कमर्शियल एक्टिविटी, सो वो अलाउड नहीं है। बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, व्हाट वी आर डूइंग दैट इज द एकेडमिक एक्टिविटी।
तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक शेडो है इस आर्टिकल की कि वी कैन यूज दिस मटेरियल अंडर फेयर यूज, और हम इसलिए आज तक कर पा रहे हैं, राइट। बट दिस फेयर यूज अगेन इट्स अंडर द लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, इट्स नॉट सो सिंपल सर। इतनी ही एग्जम्पशंस हमारे पास होती, इतना ही फ्री हैंड अगर हमें कॉपीराइट यूज करने का होता तो ओईआर की जरूरत ही ना हो, राइट। देयर आर लॉट ऑफ कंडीशन, होता है ना, छोटा सा स्टार लगा कर लिख देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, राइट। सो दिस फेयर यूज सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, दिस टू वर्ड फेयर यूज, बट इट्स नॉट सो इजी कि मैं कुछ भी यूज कर लूं फेयर यूज के नाम पर, ऐसा नहीं है। लॉट ऑफ कंडीशंस वी हैव कि आप यूज कर सकते हैं, इट्स ओके। लेट्स से let's say you use a copyrighted material, you given the citation references, still author have a right to ask you why you are using my material without my permission, still even you given the references and citation, okay। So author ने अगर question किया, then in a answer if I say कि I have a assumption in the act और मैं इसको fair use में यूज कर रहा हूं, well, it's okay, then that answer is not sufficient, we have to prove it, we have to justify it कि मैं इस कंटेंट को फेयर यूज में ही डील कर रहा हूं। एक जस्टिफिकेशन देनी होगी, प्रॉपर जस्टिफिकेशन बना करके सबमिट करनी होगी, देन द कोर्ट एंड द आंसर विल बी एक्सेप्टेबल कि आप इसको फेयर यूज में करें। अदरवाइज हो क्या रहा है, most of the people they are doing the infringement of copyright act, और जब वो पकड़े जाते हैं then says कि हम तो इसको academic fair use में यूज कर रहे थे, okay, then court say कि prove it, justify it, and if you able to justify this then you are, I can share you lot of cases. When I was doing my cyber law, I have seen lot of live cases in my career in Delhi High Court, Supreme Court, बहुत cases देखे हैं related to this कि कैसे लोग infringement of act करते हैं। I can share lot of example, कुछ popular example share करता हूँ, एक या दो, otherwise बहुत सारे examples हैं मेरे पास। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस महेश्वरी देवी फोटोकॉपियर शॉप, एक कॉपीराइट का केस चला। 2012 में केस फाइल हुआ अगेंस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट द क्लीन चिट फ्रॉम द दिल्ली हाई कोर्ट। इट मींस 6 इयर्स लगे दिल्ली यूनिवर्सिटी को टू प्रूव देम, टू जस्टिफाई देम कि वो फेयर डीलिंग ही कर रहे थे, और उस केस का जो जजमेंट था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल, यही आर्टिकल मेंशन था, just because of this article they are clean sheet, but उनको प्रूव करना पड़ा, जस्टिफाई करना पड़ा। It took 6 years. Now you and me in a individual capacity you can now think कि अगर हम किसी ऐसी प्रॉब्लम में कहीं फंसते हैं, कितनी एनर्जी, कितना पैसा, टाइम हमें इन्वेस्ट करना पड़ जाए, कितनी हरासमेंट हमें इन्वेस्ट करनी पड़ जाएगी, कितने साल लगेंगे, we don't know कि हमारा लक कहाँ तक हमें लेकर जाएगा, राइट। इवन वन मोर केस अगर बताऊंगा आपको, दैट इज कुछ टू 6 ईयर, बहुत सारे केसेस हैं। वन ऑफ द यूनिवर्सिटी they received legal notification from Warner Brothers, Warner Brothers, you know, Hollywood movie maker, Warner Brothers से उनको लीगल नोटिफिकेशन आता है यूनिवर्सिटी को कि योर यूनिवर्सिटी इज downloading our latest movies via torrent, and downloading these movies again illegal, and you have to pay this much of penalty, and penalty was mentioned in dollar, more than university annual budget, right? Then university prepare a wonderful justification like they have some unique, short में बता रहा हूँ, justification is very long, कि they have a unique courses like film study, literary art, visual art, right? And these courses required to fulfill their academic criteria to watch this movie, download this movie, and they are using it under fair bill. So उन्होंने बहुत अच्छी justification बनाई, and they were lucky कि first hearing में ही case were dismissed.
राइट, फर्स्ट हियरिंग में ही केस वर डिसमिस। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं व्हेन वी स्टक एंड इट्स डिपेंड कि आप कितनी जस्टिफिकेशन दे पाते हैं, कितना क्लियर उसको केस को हम प्रेजेंट कर पाते हैं, कितना टाइम लगेगा। सो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ ए थिंग, to avoid this kind of a thing, to save our skin from the copyright issues, that's why OER were introduced, where we does not have this kind of a problem. You can use any OER material, कोई ऑथर की परमिशन आपको नहीं लेनी है, यू कैन डू एनी मॉडिफिकेशन, इवन आप साइटेशन रेफरेंसेस भी ना दो, दैट्स व्हाट्स लीगली इट्स अलाउड कि आप साइटेशंस भी ना दो, रेफरेंस भी ना दो, तो बट इट शुड बी ए बेस्ट प्रैक्टिस, हमें साइटेशन तो देना ही चाहिए, राइट, ऑथर को क्रेडिट तो देना ही चाहिए, इट शुड बी बेस्ट प्रैक्टिस, रिकमेंड किया जाता है कि आपको क्रेडिट तो देना ही है ऑथर को, बट लीगली वी आर नॉट बाउंड कि ओईआर कंटेंट का मुझे रेफरेंसेस देना है या ना भी दूं तो चलेगा, राइट। तो इसलिए इन बाउंडेशन से हटके एक ओईआर को इंट्रोड्यूस किया गया वेयर वी कैन शेयर आवर एजुकेशनल मटेरियल फ्रीली, और ये लेवल ऑफ शेयरिंग से अटैच की गई कि फर्दर उसका जो कंट्रीब्यूशन अगर कोई करना चाहे दे कैन डू इट फ्रीली, उसकी चेन बनी रहे शेयरिंग की, कंटेंट की, दैट्स व्हाई ओईआर वर इंट्रोड्यूस। ठीक, अब ओईआर ओ मिलेगा कहाँ, कहाँ से सर्च करें, एक्सप्लोर करें, कहाँ पर मिलेगा हमें ओईआर मटेरियल, इतना ही अगर यूजफुल है तो वेयर वी कैन सर्च इट। सो वी हैव plenty of websites, plenty of websites जहाँ पर मुझे ओईआर मटेरियल अवेलेबल है। जैसे the first site we have, the main site oercommons.org, right, oercommons.org. Sorry, I'm not well today. So we have this kind of a oercommons.org, this is the official site of OER. So here you can search all kind of a OER material. बहुत सारी साइट्स हैं, OER is ऑफिशियल साइट, बट देयर आर सो मेनी OER साइट्स जहां से मैं ये मटेरियल सर्च कर सकता हूँ। जैसे एनडीएल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, आपने सुना होगा, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दे मेड द OER मटेरियल, बहुत सारी है। जैसे एनडीएल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, NDL, do the registration into the NDL site and you can search any OER material, right? या आपने MOOCs डेवलपमेंट गाइडलाइन भी अगर पढ़ी हो, there are 17 page document MOOCs डेवलपमेंट गाइडलाइन, right? In their guideline they clearly mention कि whatever material you are uploading on this digital initiative mean to say स्वयं प्रभा, NPTEL, NDL, राइट, EPG पाठशाला, ई पाठशाला, जितने भी ये हमारे डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, the all the site you need to upload only creative common material. So it means जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव हैं दे आर फुल ऑफ क्रिएटिव कॉमन्स, वहां पर जितना भी मटेरियल मिलेगा आपको सिर्फ क्रिएटिव कॉमन्स ही मिलेगा, बिकॉज दे हैव ए क्लियर गाइडलाइन कि आपको अपलोड ही क्रिएटिव कॉमन करना है। So we have lot of websites, you can see which sites I have written here, like if copyright free image कहाँ से मिलेंगी, Pixabay है, Footer है, Pixels है, Flickr, Unsplash, copyright free music कहाँ से मिलेगा, Incompetech, free sound, SoundCloud, Zomando, फिर copyright free वीडियो कहाँ से मिलेगा, YouTube, अब YouTube पे फिल्टर अप्लाई करना पड़ता है, I will show you, right, टीचर ट्यूब, बहुत सारे हैं। टेक्सचुअल मटेरियल कितनी सारी, यू कैन सी साइट मैंने लिस्ट की हुई है यहाँ पर, यू कैन सी बहुत सारी डिजाइन आइकन इलस्ट्रेशंस के लिए फ्लैगन, हुमैंस, आइकनेट, ड्रॉकिट, बहुत सारी साइट्स हैं। 7 सोर्स ऑफ फ्री हाई क्वालिटी स्टॉक इमेज कहाँ से मिलेंगे, पिक्साबे, अनस्प्लैश, स्टॉक स्नैप, फ्लिकर, पिक्सल, कितनी सारी साइट्स मेरे पास है। और एक लिस्ट और भी दिखाना चाहूंगा, सी हियर, इतनी सारी साइट्स यहाँ पर मेंशंस हैं where we can collect the OER material, MIT Open Courseware, right, Open Courseware, Open Licensing, Digital Library, OER, right,
OERcommons.org, Project Gutenberg, Internet Archives, archive.org, CNDL, National Digital Library. कितनी सारी साइट्स हमारे पास अवेलेबल है, राइट? NUR, ओपन एजुकेशन रिपोजिटरी, वर्ल्ड बैंक, ओपन टेक्स्ट बुक, every material is available. लॉट ऑफ वेबसाइट आई हैव लिस्टेड, और ये पुरानी लिस्ट है, अब तो बहुत सारे नए एड-ऑन्स आ चुके हैं। इतनी सारी ओपन ऑडियो बुक, वीडियो, बहुत कुछ मिल जाएगा, राइट? सी इतने सारे फ्री डाटाबेस भी हैं हमारे पास, DOJB, DOAB, स्कॉलर वर्क्स, हाईवायर, बेस, यूनिवर्सिटी ऑफ HK, कितने सारे डाटाबेस हैं जो फ्री में अवेलेबल, ओपन सोर्स, डिजिटेशन, थीसिस, शोध गंगा, एक्सेट्रा, दिस, राइट? तो बहुत सारे ओपनली साइट्स अवेलेबल हैं जहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब का एक एग्जांपल ले रहे थे हम, यूट्यूब हम सब यूज करते हैं, नो डाउट इन इट, राइट? तो यूट्यूब में जनरली OER मटेरियल कहाँ से मिलेगा? मैं कोई भी वीडियो सर्च करता हूँ, जब जैसे हाउ दी इलेक्ट्रिक कार वर्क्स, एनी मटेरियल जो भी आपको जब सर्च करता हूँ, नाउ आई हैव द वीडियो, मिलियंस ऑफ वीडियो, वेयर वी हैव ए मिक्स काइंड ऑफ वीडियोस, कॉपीराइट भी है, OER भी है, मींस अब मुझे फिल्टर अप्लाई, आफ्टर एंटरिंग द कीवर्ड गो टू द फिल्टर, और सी यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएटिव कॉमन्स, फीचर्स के अंदर सी द ऑप्शन, अप्लाई द फिल्टर क्रिएटिव कॉमन, and now see videos are filtered. अब जितना भी रिजल्ट है all are OER. अब मैं किसी भी वीडियो को without any issue I can use it, कोई भी वीडियो को मैं इसको यूज कर सकता हूँ। और उसको इंश्योर करने के लिए कहाँ से मिलेगा? मोर पे जाइए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लाइसेंस, Creative Common Attribution License, reuse allowed, means level of sharing. Remember, इसमें level of sharing क्या है? Reuse allowed, right? Without taking permission, you can use this video, reuse allowed. So YouTube we have only this type license. यहाँ पर अब वो multiple level of sharing नहीं है, all 6 type of license नहीं है। YouTube में सिर्फ 2 ही तरह की वीडियो होती हैं, standard YouTube license and Creative Common Attribution license, where we have a reuse allowed. सिर्फ 2 ही टाइप की वीडियो होती है। So we can use this video after applying the filters. जैसे मैं अगर गूगल पर कुछ सर्च करता हूँ, राइट, तो हम मैक्सिमम यूज करते हैं हाउ द इलेक्ट्रिकल कार वर्क्स, राइट? सेम हियर, अप्लाई द फिल्टर, टूल, एडवांस सर्च में लास्ट ऑप्शन you can see usage right, and here we have all the filters. See, free to use or share, free to use or share even commercially, free to use or share modify, free to use or share modify even commercially. So आपको क्या अप्लाई करना है? एडवांस सर्च। So अब जो रिजल्ट आता है all are OER, free to use or share। अब आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी कुछ सर्च करना हो, लेट्स से बिंग भी एक सर्च इंजन है, राइट? यहाँ पर कुछ भी सर्च इंजन करना है, मैं फ्लावर कुछ भी सर्च करता हूँ बिंग पर, इमेजेस, राइट? बिंग पर ओके, फ्लावर की इमेज सर्च कर रहा हूँ, हियर यू कैन सी मोर पे गया, एंड नो सॉरी, फिल्टर and license, you can see all the license type भी है जो अभी हमने डिस्कस की, all creative common, public domain, free to use or share, free to use commercially, free to modify, so all creative common. So now I can use any image. बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं हमारे पास, पिक्साबे बहुत सारे हैं, एक पिक्साबे पर गया, यहाँ पर ये दिस इज डेडिकेटेड OER साइट, स्टनिंग रॉयल्टी फ्री इमेजेस एंड रॉयल्टी फ्री, इट्स अ कंप्लीटली OER sites, dedicated OER sites we have, that is the Pixabay. And here you can see Pixabay is the vibrant community of creator sharing royalty free image, video, audio and other media. All content is released by Pixabay under the
content license which make it safe to use without, because that is the line, see, without asking for permission or giving credit to the artist, even certain commercial purpose. तो कितने सारा कंटेंट अवेलेबल है जहां से मैं फ्री में चीजें यूज कर सकता हूँ. I can save my screen from the copyright issues. Pixabay, Flickr, Pixels, बहुत सारी है, मैंने आपको अपनी लिस्ट दिखाई है, बहुत सारी. So we have to be very careful जब हमें किसी भी कंटेंट को यूज करना है. तो एक और चीज, जैसे YouTube की हम बात कर रहे थे, YouTube से हमने वीडियोस डाउनलोड भी की होंगी, राइट? यस और नो, करते हैं डाउनलोड? Yes, sir. There are a lot of way to download the videos. बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग जिससे वीडियोस को डाउनलोड भी करते हैं. So for your information, downloading the video from YouTube is not allowed. It's against the YouTube terms and condition. Whatever tool we are using, मुझे नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, whatever tool we are using to download the YouTube video, all are illegal tool. All are illegal. In fact, there is a no option on YouTube to download the video. कोई option होती ही नहीं. I can just download my video which I uploaded on my channel. सिर्फ अपनी ही वीडियो जो मैंने अपलोड की है, I can download it. Otherwise, I cannot download any video in YouTube. There is no option. You might be confused कि एक ऑप्शन देखी तो है हमने डाउनलोड की, देखी होगी कभी ना कभी, हर वीडियो के साथ एक ऑप्शन होती है डाउनलोड, राइट? So that's not a download, it's a offline view. It's a offline view of the video. See, यहाँ पर एक ऑप्शन है डाउनलोड, दिख रहा है हमें? So if I click on download, that will be not download in my system. ये एक YouTube ऐप में ही डाउनलोड होता है, which I say offline view. I cannot use this downloaded video out of the app. That will play within the app. So it's an offline view. It's not a download. It's not a download, right? So कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास ऐसा YouTube का ऐसे डाउनलोड. So be careful जब हम वीडियोस को यूज करते हैं. So only sharing is the right way to do it. So जब हम LMS की बात करेंगे लास्ट सेशन में, I am with you for more sessions. जो हम लास्ट में शेयरिंग की बात करेंगे, how to share the content to the LMS, then I will show you the right way to share these video on the LMS. और आई कैन से URL भी राइट वे ये नहीं है शेयर करने का. जनरली वीडियो कैसे शेयर करते हैं URL से. इट्स नॉट ए राइट वे टू शेयर द वीडियो. सो आई विल शो यू द डिफरेंट करेक्ट वे की वीडियोस को कैसे शेयर किया जाता है जब हम LMS पे लास्ट टॉपिक पर जब हम बात करेंगे. ओके, सो ऐसे OER रिलेटेड बहुत कुछ है हमारे पास. वी कैन सर्च एंड वी कैन यूज द मटेरियल OER. सो नाउ विल डू वन थिंग. हाफ आवर का भी एक ब्रेक है. ब्रेक तो नहीं कहूंगा मैं, हाफ आवर यू हैव ए टास्क. यू नीड टू सर्च दी OER मटेरियल. इतनी सारी साइट्स आपको दी गई हैं. NDL, मेन इज NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पर तो करना ही है. NDL पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहां से अपने डिसिप्लिन से रिलेटेड वीडियोस को सर्च करेंगे, यूट्यूब से वीडियोस को सर्च करेंगे, OER की वीडियोस को, राइट? और उनके URLs को कहीं नोट डाउन, कहीं स्टोर करोगे, राइट? और टेक स्क्रीनशॉट्स. सो जो आपको एज ए असाइनमेंट आपको सबमिट भी करनी है MMTC सेंटर्स में भी, राइट? सो OER को सर्च कीजिए आपके मटेरियल से रिलेटेड. सो जो वीडियो अभी आप सर्च करेंगे, 5 वीडियोस फ्रॉम NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, 5 वीडियो फ्रॉम यूट्यूब, इन्हीं वीडियो को हम कमिंग सेशंस में जब हम ऑनलाइन कोर्स डिजाइन करेंगे तो वहां पर यूज करेंगे, राइट? इन्हीं वीडियो को हम यूज करेंगे. सो अभी मटेरियल को कलेक्ट कीजिए. और मटेरियल कलेक्शन क्या है? OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज. सो मटेरियल वीडियो को आप कलेक्ट कीजिए. हाफ आवर आपके पास है. ड्यूरिंग दिस हाफ आवर यू कैन ट्रीट लाइक ए टी ब्रेक और ए असाइनमेंट एक्टिविटी. इस हाफ आवर में NDL पे रजिस्ट्रेशन करके वीडियो लेना है, यूट्यूब से रजिस्टर करके OER की वीडियो कलेक्ट करनी है. 5 फ्रॉम NDL, 5 फ्रॉम यूट्यूब. और कोई सोर्स अगर आपके पास है, पिक्साबे, पिक्सेल्स, कुछ भी ले सकते हो. बट दिस आर द टू थिंग. कोई भी OER मटेरियल, इफ यू फील कि वहां पर बेटर मटेरियल अवेलेबल है, किसी भी OER साइट से
मटेरियल को कलेक्ट कीजिए एक प्लेस पर, मटेरियल को कलेक्ट कीजिए। सो हम हाफ आवर के बाद फिर से एक साथ जुड़ेंगे, और कोई भी क्वेरीज आपकी हैं प्लीज नोट इट डाउन। सो क्वेरीज में 12 बजे आपकी कलेक्ट करूंगा, जितनी भी क्वेरीज आपकी होंगी प्लीज सारी क्वेरीज को नोट कर लीजिएगा, और तब तक मटेरियल को कलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं आपके साथ हूँ, ऑलमोस्ट 4 सेशंस में आपके साथ हूँ, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रहा इतना कुछ बताने के बाद। सो डोंट बी थिंक कि बहुत कुछ रहता है, ऑफ कोर्स रहता है। सो हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू रहेंगे आपके साथ। आज अभी नेक्स्ट अभी हम हाफ आवर के ब्रेक के बाद फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? सो यू हैव अ हाफ आवर टाइम, प्लीज डू योर जॉब, देन आई विल सी यू आफ्टर 30 मिनट, एंड देन स्टार्ट अगेन विद न्यू थिंग, न्यू टॉपिक। पहले क्वेरीज लेंगे आपकी, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, जो भी क्वेरीज माइंड में हो नोट इट डाउन, देन वी, ठीक? सो सी यू आफ्टर 30 मिनट। Thank you, sir. 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 Thank you, sir.